and welcome everybody. So glad that we have all come together to celebrate Beyond Borders. And this is a very special event from the Rhyme Republic. We have done an event somewhat similar before, but this is after a while. And while we are all scattered, this just feels very intimate and very close, and just feel so happy that we could pull this together. As you know, when we started the Rhyme Republic, it was just a bunch of crazies with this crazy idea that literature and poetry could actually, bring people together and dissolve borders. And I think we were joined along the way with many other crazy people, and that's how we are able to do these things even at the spur of the moment. So I'm very thankful to everybody who's joined. Um, since I wanted to share a little bit about my background and the fact that because my family has known war quite intimately, our countries have known war quite intimately, and today the world unfortunately knows war quite intimately. Therefore, I feel like all of our life can perhaps become some sort of joyous penance for what is going on in the world. And a way to have that sort of joyous penance is to build these kinds of bridges between our countries, especially India and Pakistan. We are so much more similar than we are different. And even the differences are things that I think we should enjoy and celebrate in each other. And this is just an opportunity for us to come together over poetry and maybe some more reading and have that joy and love. In order of appearance today, we will have Aseem, Fizza, Aseem from India, Fizza from Pakistan. We have Abhijit from India. We have Ispa, who is at the moment absconding, but hopefully she'll join us soon. Then we have Adil from Pakistan as well. Then I will read a little bit, and then we have a lovely video from Hanur from Pakistan. She couldn't be here to attend this event live, but she has sent in a lovely video. And then we will close, and if anyone else wants to give us some closing remarks, most welcome to. So we'll begin with Aseem. So it is indeed so nice to be here with all of you. Even though it's more of an intimate thing, intimate event, but it feels nice to uh, to be able to recite poetry and connect over it. It's always been the thing that has helped us, understand each other much better, even from the days of uh, when we did Sarhade. That was way bigger and there were a lot more people. But I feel poetry has always been the cornerstone of us connecting with each other, making friends across the border. And I feel it has also made me grow closer to poetry in a sense. Uh, so poetry is the essence of why we are here today. It also seems like an appropriate time considering uh, that it's both of our Independence Days, they align next to one another, and there's a lot going on in the world, and world could use a little bit of poetry and love. So, well, here we are. Mm, I'm a bilingual poet. I r- write in English and Urdu. So I'll start by reading one of my Urdu ghazals that I wrote recently. So it's still rough, and I might not be able to read certain words. In that case, you guys will have to accord me some patience. गौर फरमाइएगा कि मैं अक्सर क्यों तेरे आगे ही यूं बेताब होता हूँ मैं अक्सर क्यों तेरे आगे ही यूं बेताब होता हूँ वगरना मैं अकेले तो खुद ही दाराब होता हूँ तेरे मैं खत जो पढ़ता हूँ तो एक बादल सा भरता है तेरे मैं खत जो पढ़ता हूँ तो एक बादल सा भरता है बरसता मैं नहीं अंदर से पर सैलाब होता हूँ कई यारों ने पी पी कर कहा है यूं भी मुझको तो कई यारों ने पी पी कर कहा है यूं भी मुझको तो शराब मैं जो पी लूं तो असल जहराब होता हूँ शेर देखना कि कभी वहशत ज़दा इतना
कभी वहशत ज़दा इतना न होना जल जो मैं जाऊं, कभी वहशत ज़दा इतना न होना जल जो मैं जाऊं, अभी तो बर्फ हूं मैं बाद में बर्फाब होता हूँ, अभी तो बर्फ हूं मैं बाद में बर्फाब होता हूँ, ये तो दफ्तर ही मामूली सा करता जा रहा मुझको, ये तो दफ्तर ही मामूली सा करता जा रहा मुझको, मगर ना इश्क की हर राह में नायाब होता। आखिरी शेर है कि हजारों सांचों में ढल जाते हो तुम कैसे यूं सफदर, हजारों सांचों में ढल जाते हो तुम कैसे यूं सफदर, मैं हर एक समत को मैं हर एक समत में बहता नदी चैनाब होता हूँ, मैं हर एक समत में बहता नदी चैनाब होता। uh, there's another poem that I thought would be appropriate for today. It was a poem I wrote a while ago. It's called Punjab Singh Sodawala. And then Bora sisters also made like an animation about it. And yeah, so I love it. Uh, this is one of the poems that I wrote and felt very good about it. So, and this seems like an appropriate time. Again, I am in Punjab, sitting in Punjab, reading this poem. Another appropriate reason to read it right now. Everyone knows Punjab Singh Sodawala. Everyone knows Punjab Singh Sodawala, the 90-year-old man who sells soda near Hathi Gate in Amritsar. His stall reads, the best soda of the whole Punjab. His face is wrinkled like a forest dying of thirst. If he looks into your eyes, you see a dying star. His mustache still as graceful as Punjab's green fields, and like rivers, he just keeps giving stories that no one has time for. If you ask him about his childhood, he'd say, the skies would bend their knees in submission, as my kite would dazzle through the traffic of kites in Punjab's skies. I was the greatest kite flyer of Lahore. The kites as far as Amritsar would tremble at the vision of my kite. If you'd ask him about love, he would say, I had but one kurta pajama and it was black. When I'd go out in the village wearing it, the girls would grow restless like grass near the feet of a jaguar when he walks out in a jungle. But I had the eyes for one and only one. Her name was Satluj. But she was snatched away from me by this world, and she would have, and yet she would always be mine. If you'd ask him why did he become a soda wala, he'd say, back in the day, no one knew the intrinsic art of soda making. I redesigned the soda bottle in a manner that it seemed like a vivacious dancer was holding a marble. I called it Bante Wali Botal. I infused exactly 20% of gas that's needed in a soda, crushed 3.5 lemons like elephant crushes a watermelon with its feet, then shimmered it with rock salt from western Punjab, like like timely rains glaze over farmers' wheat crop, then filled it with ice crushed in the shape of little diamonds, then added one final secret ingredient that no one shall ever know about, and he would never tell you the secret ingredient. Today, I look into his eyes, right at the dying river, and ask him one final time, what is the secret ingredient of the best soda of whole Punjab? He lightly says, it's just water. He lightly says, it's just water. I fumble. The water, he says, the water of the place where the five rivers of Punjab, Jhelum, Ravi, Chenab, Byas, and Satluj all meet each other and form Panjnad. How else can you make the best soda of the whole Punjab? I Okay. loved this one. So beautiful. Thank you so much. All right. Uh, I'm a little confused. What should I read? I'm going to read one of the translations that I did a long while ago of The Quiet World by Jeffrey McDaniel. I translated it from English to Urdu. So here is how it goes. इस जद्दोजहद में कि खासो आम को एक दूसरे की आंखों में ज्यादा इस जद्दोजहद में कि खासो आम एक दूसरे की आंखों में ज्यादा देखे और गूंगों की कौम को लुभाने के हिसाब से
हुकूमत ने फैसला किया है कि हर शख्स के लिए दिन में सिर्फ 167 अल्फाज इस्तेमाल करना ही जायज होगा। जब टेलीफोन की घंटी बजती है तो अब हेलो ना कह, चुपचाप उसे कान पर लगाए रखता हूँ। रेस्टोरेंट में मेन्यू पर ही उंगली टिका बयां कर देता हूँ कि क्या खाना है। इस नए सलीके में आराम से ढल रहा हूँ। देर रात फासलों के इस्तरार में कैद मेरी मोहब्बत को रोज जब टेलीफोन मिलाता हूँ तो फक्र से फरमाता हूँ, सिर्फ 59 अल्फाज जाया किए आज, बाकी सिर्फ तुम्हारे लिए। जब उस तरफ से कोई आवाज नहीं आती, समझ जाता हूँ कि सारे अल्फाज इस्तेमाल कर चुकी है वो, इसलिए आई लव यू ये दोहरा देता हूँ पूरे 32 और 1/3 दफा। और फिर एक दूसरे की सांसों की सरगोशियों को सुनते हैं दोनों रात भर। It's such a favorite, this poem, and it's the first time I've heard it in translation. It's Is it? I thought I would have recited it to you at one of the events or somewhere. no, I haven't heard it Hmm. before. It's really beautiful. Thank you for that. It's like it was meant to be translated in Urdu, right? Yes, the softness of it and the ache of it is, Exactly. is perfect. You know, Sidra hasn't joined yet, but I wanted to share this book that Sidra got for me. I think the book of Book Urdu poetry and poetry. verse, and she's got it from Readings Lahore. And just the fact that it's from a bookstore in Lahore makes me very happy. And Yes. I wanted to, I wanted to start with this before, but I'll just do it now between Aseem and Fizza. I wanted to talk about the fact that, when we talk about shared culture and all of that between India and Pakistan, so much of that is just the storytelling and the stories we've grown up with and the comic books and the characters. And in this book, there was one short little story which just felt like something one of my uncles would have told me or somebody in the family would have told me. It's called Mullah Doh Pyaza, and it's called Who is the Fool? See, look at them smiling and laughing, my Pakistani friends. They already know this story. So, who is the fool? One day, a merchant came to Akbar's court, bringing several fine horses for sale. Akbar greatly admired them and asked him to bring more of the same kind. The man asked for an advance payment, and Akbar had him paid 100,000 rupees. Sometime later, Akbar ordered Mullah Doh Pyaza to make him a list of all the fools in his court. When he brought him this list, Akbar saw to his astonishment that his own name topped the list. He asked Mullah Doh Pyaza to explain. Mullah Doh Pyaza said, without even thinking about it, you gave that merchant 100,000 rupees. Do you think he'll bring your horses? Do you think you'll ever see his face again? Akbar said, and what if he does bring them? Mullah Doh Pyaza said, in that case, I'll cross out your name and put his in its place. So cute. This is like those stories that your uncles will tell you every time you meet them, and every time you will laugh at it. And it just feels like these are the kind of shared histories that are part of all our stories. So, with that, I hand over to my lovely friend Fizza, and she's going to do a bit of reading. Hello everyone, my name is Fizza. मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। 17-18 साल हो गए पाकिस्तान छोड़े हुए, और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स दोनों साइड से लखनऊ से माइग्रेट हुए थे पार्टीशन के वक्त। तो कल्चरल रूट्स हमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंडिया में ही अभी तक हैं। और जब मेरे पेरेंट्स बात करते हैं, मेरे फादर की डेथ होगी 6 मंथ्स पहले, पर जब वो पेरेंट्स मेरे जब बात करते थे तो अभी तक लखनऊ की बात ऐसे ही होती है जैसे अपना घर। और जब इन जनरेशन की बातें सुनो तो लगता ही नहीं है जैसे कि कोई कुछ हुआ भी था हमारे बीच में जिसने हमें अलग किया, और ये बात हमें पाकिस्तान से बाहर निकल के महसूस होती है ज्यादा। 18 साल पहले जब पाकिस्तान छोड़ा तो जो बाहर जब निकले तो लोग इतने सारे स्ट्रेंजर्स के बीच में अपनापन ढूंढते थे, तो सिर्फ पाकिस्तानियों को ही ढूंढते थे। उसके अगले 2-3 साल में पता चला कि वो जो अपनापन है उसका सर्कल हमने खुद ही बहुत नैरो किया हुआ है, और वो सर्कल एक्चुअली काफी ब्रॉड है। और जब भी आज तक जब भी हमें अपनाइयत या प्यार या दोस्ती की फीलिंग है, वो
इन आर केसेस ओनली हमें इंडियंस से ज्यादा, पाकिस्तानी से ज्यादा इंडियन से हुई है। हम लोग के 99% फ्रेंड्स जो है सारे के सारे, जो हमारा क्लोज सर्कल है, जिनको हम अपनी चोजन फैमिली बोलते हैं, वो सारे इंडिया से ही हैं। ये बहुत मजे की बात बताती हूँ, जब हम लोग के बच्चे बड़े हो रहे थे, उनको कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। इनफैक्ट हम उनको फोर्स ही करते रहते हैं पाकिस्तान के लिए पेट्रियोटिक होना, लेकिन वो लोग इतना एसोसिएट नहीं कर पाते। अब तो वो कंफ्यूज हैं कि पैदा कहीं हुए हैं, ओरिजिन कहीं पे है, पासपोर्ट कहीं का है, तो वो तो पता नहीं, शायद सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं या शदीद कोई कंफ्यूज लोग हैं। लेकिन मुझे याद है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, हमारे फ्रेंड्स के, पता नहीं, शायद मैंने नंदिनी से ये चीज शायद शेयर भी की है एक बार, कि कभी उन लोगों ने, बच्चों ने कभी ये चीज फर्क महसूस नहीं की। तो एक बार जब मेरा बेटा माशाल्लाह 15 साल का है, जब वो एक बार मेरे पास आया, भागा भागा बड़े परेशान, और मुझे कहने लगा, मामा मामा आपको पता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर। एंड आई वाज लाइक यस, एंड ही, दैट वाज द बिगेस्ट शॉक फॉर हिम, क्योंकि उसको अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि ये दोनों मुल्क, जिनके लोग इतने मिलके रहते हैं एक दूसरे के साथ, हम लोगों ने तो कभी फर्क नहीं किया। तो अगर उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखो और उस बच्चे के लेंस से देखो, जो कि बच्चों का लेंस नफरत के बगैर ही होता है, तो उसमें कोई भी आपको फर्क महसूस नहीं होगा। और ये, इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि हम लोग लगते एक जैसे, हमारा खाना पीना, सबसे बड़ा हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर एक जैसा है। तो वो जो कंफर्ट हमें चाहिए होती है, स्पेशली परदेश में, वो अपनों से ही मिलती है। और अब हमारे सर्कल में वो अपने जो हैं, वो हमारे इंडियन बहन भाई, हमारे फ्रेंड्स भी हैं। हम, मेरे अपने पर्सनल केस में, जब भी कोई लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए, तो मैंने उनको ही अपने साथ पाया। थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ, क्योंकि ये बात मेरे दिल के बहुत करीब है, ये टॉपिक। कोई भी खुशी का मौका हो, जब ईद पे कभी लोनलीनेस फील हुई हो, जब रोजे खोल रहे हो अकेले अकेले, तो हमारे इंडियन फ्रेंड्स हमारे साथ इफ्तारी करने आ जाते थे। ईद पे हमें अपने घर बुलाते थे। ये मैं सिंगापुर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे अपना विलेज मिला, मुझे अपना सपोर्ट सिस्टम मिला। जब बहुत टफ प्रेगनेंसी के बाद आई हैड माई थर्ड चाइल्ड, तो जब मैंने होश आया मुझे, तो मेरे वही फ्रेंड्स मेरे आसपास थे। 6 महीने पहले जब मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, और मैं ट्रांजिट में थी सिंगापुर में वापस ऑस्ट्रेलिया, बहुत मुश्किल फ्लाइट थी मेरे लिए वो, जब मैं वापस आ रही थी और अपनी फैमिली को छोड़ के। तो उनको पता चला कि सिंगापुर में मेरा ट्रांजिट है, तो मुझे मालूम भी नहीं था। और जब मैंने अपने प्लेन्स को स्विच करने के लिए जब एयरपोर्ट से कदम निकाला, तो वो वहां खड़े हुए थे। उनको पता था मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, तो वो मुझे सिर्फ एक हक करने के लिए, कि तुम्हारा आगे का सफर काफी लंबा है, वो वहां खड़े हुए थे। तो बस उम्मीद यही है कि इस दुनिया में, जहाँ पे आजकल सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, शायद हम जैसे लोग, हम लोगों का प्यार, हम लोग जो फील करते हैं, आई होप कि वो काफी हो। लगता नहीं है कभी कभार कि वो काफी होगा, लेकिन बस दुआ ये है दिल से, अल्लाह मियाँ से यही दुआ है कि बस अगर इस पूरी दुनिया के अंधेरे में अगर हम लोग कोई लाइट बन सकें, और हम लोग हमेशा प्यार को, दोस्ती को चूज करें ओवर एनी काइंड ऑफ नफरत, सो होपफुली कि वो काफी हो। तो आपको भी बहुत बहुत इंडिपेंडेंस मुबारक, हमें भी। और बस दुआ करें कि हमारी सोच भी आजाद हो, सिवाय हमारे मुल्क सिर्फ आजाद ना हो, हमारी सोच भी आजाद हो। और सही आजादी उसी को कहते हैं शायद। मैंने कभी जिंदगी में कोई पोएम रिसाइट नहीं की है। आज नंदिनी ने पूछा तो मुझसे ना नहीं हुआ नंदिनी को। ये दिस इज हर फोर्टे, दिस इज नॉट माइन। लेकिन एक पोएम है जो मुझे बहुत पसंद है, और ये अच्छा ही बात है कि बहुत सारे लोग नहीं आए आज। तो मैं अपने क्लोज कंफर्ट सर्कल में ये पढ़ सकती हूँ। तो कोई गलती हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, शायद आपको समझ भी ना आए गलती हो, क्योंकि कुछ उर्दू काफी इसकी सख्त है। तो अगर कोई गलती हो, असीम आप पकड़ लेंगे मुझे। तो शुरू करते हैं। ये अली सरदार जाफरी की है एक कलाम, और इसका नाम है गुफ्तगू बंद ना हो। और मुझे लगता है कि हम सब से काफी रेजोनेट करेगी ये। तो चलें शुरू करते हैं, कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम मुलाकात चले, हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हों जो अल्फाज के हाथों में है संगे दुश्नाम, तंज छलकाए तो छलकाया करे जहर का जाम। तीखी नजरें हों तर्श अब्रू खमदार रहें, बन पड़े जैसे भी दिल सीनों में बेदार रहें। बेबसी हर्फ को जंजीर बपा कर ना सके, कोई कातिल हो मगर कत्ले नवा कर ना सके। सुबह तक ढल के कोई हर्फ वफा आएगा, इश्क आएगा बस सद लफ्ज़ पा आएगा। नजरें झुक जाएंगी, दिल धड़केंगे, लब कांपेंगे, खामोशी बोसाए लब बन के महक जाएगी।
सिर्फ गुंजों के चटखने की सदा आएगी। और फिर हर्फ व नवा की ना जरूरत होगी, चश्मो अब्रू के इशारों में मोहब्बत होगी। नफरत उठ जाएगी, मेहमान मुरव्वत होगी। हाथ में हाथ लिए सारा जहां साथ लिए, तोहफा दर्द लिए, प्यार की सौगात लिए। रेगजारों से अदावत के गुजर जाएंगे, खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। खून के दरियाओं से हम पार उतर जाएंगे। गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले, सुबह तक शाम में मुलाकात चले। हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। हम पे हंसती हुई ये तारों भरी रात चले। Officially a wonderful poet. If you can recite with that much emotion, it was just gorgeous. I'm Thank sure you. you enjoyed it too. फैसल Faisal, कुछ नहीं। say. फिजा, एक तो आपका लग नहीं रहा था कि फर्स्ट टाइम आप रिसाइट कर रही हैं। दूसरा, आई एग्री विद फिजा बिकॉज जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा था फॉर फ्यू इयर्स तो मेरे जो करीबी दोस्त थे वो इंडिया से थे। एंड दो तीन दफा उन्होंने इस तरह हेल्प किया था, स्पेशली वन ऑफ माय फ्रेंड्स, कि आई कैन नेवर थैंक हिम। और वो थैंक यू कहना उसके लिए मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक हिम। Well, thank you. Thank you. No, I'm so glad that you shared that because that's the sentiment I think that we all feel and that closeness that we feel. And now we have our doctor poet or poet doctor Abhijit with his poetry. Thank you, Fizza, for sharing all of that. और बहुत ही खूबसूरत. I would love to read more of you. Please write more and share more. It's a request. Please. Firstly, I would like to apologize अगर आपको बैकग्राउंड में बॉलीवुड गानों पर 15th August के बेस्ड गाने सुनाई दे रहे हो, because there is a lot of that happening in my area and no matter in whichever room I go, I cannot escape that. आपको yeah. Nandini has given a brief introduction about Rhyme Republic, and most of the people here, I think, are friends of Rhyme Republic, so they already know about us and the work that we've been doing or have done. There was a bit of a gap because people, all of us, our friends, we all migrated to different parts of the country and different countries. But hopefully, this will be a start of something new again. I hope so. And we have a lot many other things in our heads and which we want to bring to life. So hopefully we will be able to do that. I was just अभी किसी ने कहा कि attendance कम है on the event. I was just getting messages from people कि not in the right frame of mind to join a poetry event today because of all that's been going on in India. I'm sure all of you must have seen. I also was not in so much of a mood or mind for poetry, to be very honest. But I think whenever things like these happen or come up, we go back or resort to that island of poetry and inadvertently the softness it provides. So maybe the people who are not able to join right now, when we share this and maybe the poetry helps them also in some way to lighten their hearts. So the poem that I have for you today, I thought a lot about it because I wasn't sure what I should read. So this poem that I'm going to read, ये मैंने 7 साल पहले लिखी थी जब हमने ये सरहदे सराबों का इवेंट करा था दिल्ली में. It was for a dear friend from Karachi. So I revisited that poem today, maybe after 7 years. And I loved it the same. Matlab, maybe it's now, my writing is different now, and maybe this poem feels more raw compared to that when I read, but it feels more real also. So I felt like sharing that with you. Actually, काफी challenging है because I have to outdo the noise in the background so that you can hear me. Because Abhijit, you're quite audible and we can't hear anything. That is great then. So I'll give you a brief context of this poem. So my friend in Karachi, she sent us some letters. She sent me some letters
and the letters couldn't reach us because they were stopped at the security. और वो पता नहीं शायद उन्होंने फाड़ के फेंक दिए वहां पे. They were just simple letters, okay, but वो आए नहीं हम तक. So that was something which was, maybe you could just forget it is an one-off incident, or one of those things which happen. But that made me think about a lot of things, and that gave birth to this poem that I had written then. I still remember I was in Connaught Place, Delhi. सर्दियों की रात थी. It was winters. और वहां पे मैंने ये राजीव चौक पे on the metro I had written this poem. So that's the poem, and we met many friends through poetry, Rhyme Republic, and the reading book that we all were a part of. I should definitely acknowledge that group, Bouquet. And as all good things must come to an end, that too did. But it gave us many good friends and people that we are still in touch with. So this poem is for that friend जिनके खत मुझ तक पहुंचे नहीं थे, उनके लिए मैंने ये लिखी है. She still used to stay in Karachi. I'll start the poem. If you imagine all of it, you'll be with me in the poem. So I would request you all to imagine it. I'll try to be slow for effect. They didn't let your letters come through, I hear. I think I know the reason why. Perhaps it was extra humid in Karachi that day, and maybe the paper vaporized into clouds, unnoticed, uncared for. Just evaporated like blood drops do from discarded bodies that don't belong to any religion. Find their solace in death, the way kafirs do, fakirs do, when they walk away from a god. Or perhaps the alphabets had their own mood swings, and all of them decided to take a walk across the boisterous streets of Do Darya in Karachi. Dive into the vast expanse of Arabian Sea. Perhaps they are swimming towards me now as we speak. Perhaps the aroma of firnis intermingling with the moonshine of your city lured them back into the same alleys of Sadar. My grandmother so fondly remembers every time she feeds a leper by the footsteps of Jama Masjid, and his morsels get stained with her teardrops, those which have no real flavor now, neither salty nor sweet, happy or bitter. The way a drowning man, after struggling for a bit, accepts his fate, smiles in the face of death. Or Alif, Be, Pe, maybe just had hunger pangs, She wrote to me in Urdu and stopped for some nihari at Burns Road. It must be that. It's quite a distance from your city to mine. No, actually, it's not. I could drive to yours overnight. When I feel rather adventurous, I could sail or swim. But the irony is, there is no direct flight. You see, I refuse to acknowledge that they didn't let your letters reach me just because we have these borders between us, just because they have burnt 1,000 Kashmirs within us, just because the sound of your azan differs from that of my arti. But even my city wakes up to an azan, and in some distant lane of your city, I'm sure there reverberates an arti. I know there is a lot of bad blood. I know we have fought major wars, and innumerable skirmishes still haunt our skies. I know every time I don't hate your land, they think I don't love mine enough. As if that's a prerequisite for anyone. Every time I say something in your favor, my inbox gets flooded with such an anti-national. Go to Pakistan. Hate is always easy. Hate is always easy. It's peace that takes a lot of work. I know it only gets worse every time there is some semblance of peace. A bomb explodes somewhere on our skins. The skin of our cities, it's wrinkled. It has festering sores, ancient psoriatic plaques. Our cities sing
broken, forgotten songs. They've seen a million knights stab themselves to death, yet still foolishly await for the dawn. Why don't they get it? Why don't they stop picking at the scabs? There is this place, somewhere that exists where Chenab comes to meet Ravi every night. And they both watch an Indo-Pak cricket match. No, they don't really watch the match. They just come there to talk to each other about their day. And then by the end of it, when one team wins, they both cheer, laugh. They both treat each other sometimes to Halim, sometimes to a Vadilal ice cream. And by their banks, Noor Jahan croons a ghazal as Batalvi watches his poetry float on her lips. I know you think of Delhi when you are in that beautiful state between sleep and death. And every time you hear Galib, your feet walk away from your body and reach Gali Qasim Ja Balli Mara Purani Delhi. Those 100 tales you've heard, those which you keep repeating under your breath, the tales of your ancestors, the way your Nani Ma would halt at Lodi Road en route her way to school, a little girl, to pluck a few low-hung jamuns from the old tree. The way she still describes to you the taste of that, the Pusa forest. Your grandpa used to scar along with his friends searching for jinns. The rumored spirits of Malcha village that could teleport you to the courtyards of Aurangzeb. The narrow lanes of Chandni Chowk that dream about. Like one dreams about a lover they've never really met, just heard about, never really touched, seen, and still they say a prayer in their name every night. Something like that. The way it was when they all had to leave everything midnight, walk with hearts so heavy, this earth still trembles from all that weight. Earthquakes happen, things get uprooted. All the blood that was shed, all the tears that weren't, they're still here, hanging in this air, awaiting your return. Whenever that shall be, faithful spirits from an era gone by, bound to you like a mother to her child's first cry. Even though now everything has changed, so much is still the same. This Delhi of our times perhaps isn't as beautiful, but come. I want to show you how the sunset looks when the day sinks into the bosom of Yamuna. The way Meena Bazaar on some nights adorns a shimmering anarkali suit and sways to songs of Pakiza. And if one stands very silently, one can still hear the footsteps of Mughal soldiers and their horses trampling the ruins of Horse Khas. The tales that dust from the bottom of Lal Killa whispers into the ears of the December Delhi smog. When we would be done with all that, you could shop your heart out at Sarojini or Lajpat. I'll get you the best deals, I promise. Khan Chacha would serve you the best kati roll Delhi has to offer, though they say Calcutta has the best, but still. And as you would bite into a kebab at Chowdi Bazaar, a teardrop will perhaps trickle down from the corner of your eye. In that moment, everything will come flooding back. In that moment, everything will come flooding back. All those stories you've heard, you will see in that moment, you will see your ancestors in you, around you. The house that doesn't exist anymore will come alive. You will enter it then, push open the door. A deep sigh that would last a minute, a decade, a century. Who knows? In that moment, you would become Delhi and Delhi would become you. In that moment, I will receive the letter you sent across which could never reach me. I will read it in all. I will read it all in one breath,
Inhale all of Karachi from your parchment. Look towards the skies, say a little prayer, smile, even though I don't usually pray. You will hear me still in the untimely rains that would then drench both your city and mine. Wonderful. Thank you. Thank you so much. That really, it's like a picture book. Your poem is like a picture book. It came to me in that stream of consciousness, and it was just written in 5 minutes there. Wonderful. Thank you. I have one more maybe, but I would want this to simmer, so I would not follow this with another one. Maybe at the end, if there is time, I'll read another. Sure. Yes, why not? Why not? Thank you. So next we have Adil, who has joined us. I'm not sure from which city, but from Pakistan. Adab, thank you. Thank you for this platform, and it feels so nice कि सब लोग जो हैं एक फिक्र को लेके, थॉट को लेके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं. मैं अभी फिलहाल इस्लामाबाद में हूँ. थोड़ा सा मैं अपना तारुफ इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. पेशे के लिहाज से आई एम ए टीचर. उसके साथ साथ थिएटर करता हूँ कुछ 6-7 साल से. और अभी फिलहाल कोई 1 महीना 2 से दास्तान गोई जो है उसको आई स्टार्टेड डूइंग इट. तो हम टूर कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों का पाकिस्तान में. तो कोशिश यही है कि इस चीज से हम लिंक रहें और कहानियां सुनाना, और इस तरह आप जैसे लोगों से मिलें तो उससे ये होता है कि हमारी भी काफी लर्निंग, एजुकेशन और एक तरह से हौसला मिलता है कि लोग जो हैं they are just there to talk about, to have conversations about things that actually matter. पार्टीशन के साथ मेरा ताल्लुक एक तो ये भी था कि बीच में एक तकरीबन कोई 2 साल पहले एक प्ले हमने किया था सवांग प्रोडक्शन से. तो वो मंटो की जो राइटिंग्स थी ऑन पार्टीशन, तो उसको मैंने कुछ दोस्तों के साथ अडेप्ट किया था. So that was quite a journey, और उसमें I played a role of a father जो स्टेशन पे है and he's running away and उसकी बच्ची भी साथ साथ रो रही है. तो for that scene I had to यानी जो वेस्ट की जो थ्योरीज हैं एक्टिंग पे वो मेरे काम ना ही, लेकिन जो पार्टीशन की जो हमारे दोस्त हैं जो लिखारी हैं, I visited them and that of course it was quite an experience. दूसरा ये है कि ऋत्विक घटक जो है उनका सिनेमा मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे दिल के करीब है, और उन्होंने पार्टीशन पे बहुत काम किया है और उनकी फिल्में बार बार मैं कोशिश करता हूँ कि देखी जाएं. तो दैट इज माय लिंक विद पार्टीशन. साथ साथ आई टीच पॉलिटिक्स. तो ये जो है मेरे लिए बहुत ज्यादा एक दिल के करीब, जैसा कि मैंने कहा, एक टॉपिक है. कुछ नज़में हैं, कुछ गजलें हैं. मैं अंग्रेजी, उर्दू और पश्तो में लिखता हूँ, बट ये है कि कुछ मैंने उर्दू की कुछ चीजें की हैं. दे आर नॉट लिंक्ड विद पार्टीशन उस तरह से, लेकिन यह है कि सोशल इश्यूज के हवाले से मेरी अक्सर तहरीरें होती हैं, तो उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है. तो आपकी नजर होपफुली अगर मुझे ये मिल गया. तो ये था इंडिया में कुछ लोग निकले थे स्टूडेंट्स, तो उनके हवाले से मैंने कुछ लिखा था. तो अर्ज किया है. एक नज्म है ये. कौन लिखेगा इन जख्मों को, किसकी आंख में आंसू होंगे, किसको फिक्र हमारी है. हम जो अमन के बेटे हैं, हम जो अक्ल से पैदल हैं. अपना सूरज से झगड़ा है, चांद में रहने वाली गुड़िया से अपनी दोस्ती है. अब्बा ने समझाया भी है, बेटा मगरिब बाद चांद के पास नहीं जाते. अम्मा भी बोला करती हैं, बेटा रात तो नींद के लिए बनी है. जैसे ही सब सो जाएं तुम भी लैंप बुझा देना, वरना बिजली का बिल ज्यादा आएगा. अम्मा अब्बा आपको मैं कैसे समझाऊं, अपना सूरज से झगड़ा है, रात और चांद हमारे अपने हैं.
इसीलिए मैं दिन को लंबी तान के सोता हूँ, रात के दुख मेरा कंबल है, चांद का आधापन मुझसे नज़में लिखवाता है। ताया कहते रहते हैं, दिन को जागने वाले कितने खुशकिस्मत हैं। मियाँ रमजान के बेटे को 17 ग्रेड की जॉब मिली है और पड़ोस की रजिया एक बैंकर की घर की दुल्हन है। तुम बस अपने आप से बातें करते रहना अच्छा है, ये भी अच्छी आदत है। वैसे भी जो सोचते हैं तन्हाई ही उनकी साथी है, सो तुम अपने आप से बातें करते जाओ। मैं क्या बोलूं ताया जान, इन हालात में कौन अपनी किस्मत को लेके रोता है। वैसे भी आप और आपके जैसे लोग ही तन्हा हैं। मेरे पास मेरी नज़में हैं, मेरे जिस्म पे पड़ने वाली डंडों की चोटें मुझसे बातें करती हैं। एक बेचारा आंसू एक मजदूर का एक सड़क पे मुझे मिला था, सो उस आंसू को अपने घर ले आया हूँ। एक स्टूडेंट की फीस स्लिप मेरे कमरे में एक फ्रेम की जीनत है। जब भी दुनिया मुझको अपनी जानिब खींचती है, मैं उस फ्रेम को चूमता हूँ। मुझको उसकी फीस की स्लिप में उसकी माँ के जेवर दिखते हैं। उसका अब्बा मुझसे कहता है, बाहर निकलो, जल्दी निकलो, मुझ पे पिछले साल बहुत ब्याज चढ़ा था, अब की बार मेरा बेटा शायद निकाला जाएगा, बाहर निकलो, जल्दी निकलो। अम्मा जान, अब्बा जान, ताया जान, आप समाज का चेहरा हैं, कैसे हाथ मिलाऊं मैं इस चेहरे से, इस चेहरे के वास्ते। इन हाथों से थप्पड़ ही तखलीक हुए हैं, लेकिन जल्द ही इन हाथों से मैं और मेरे दोस्त एक दुनिया तखलीक करेंगे जिसमें सब कुछ सस्ता होगा। मैं और मेरे दोस्त अमन के नगमे गाएंगे, खून और आंसू महंगे होंगे, बाकी सब कुछ सस्ता होगा। रोटी, फीस, ब्याह, मकान, जनता को सब मुफ्त मिलेगा। ताया जान, अम्मा जान, अब्बा जान, हंसिए मत, दिल्ली इतनी दूर नहीं। सो दैट वाज द थैंक यू। एक और छोटी सी नज्म है। ये दुनिया शायद अमीरों के लिए बनाई गई है, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोलने वालों के लिए, जो फैज की नज़में इसलिए सुनते हैं ताकि रो सके गली में बच्चों को भीख मांगता देखकर। और कोई जगह नहीं इस भीड़ में उसके लिए जो अपनी जन्मभूमि में खुद को अजनबी महसूस करता है, जो देखता है अपने अंधेपन की दर्जों में रोशनी का कोई मुगालता, कोई खुशफहमी जो कोई खुशफहमी जो उसे अपनी मायूसी का दुश्मन बनाए। मगर वो इस दुनिया में गलती से आ गया है और अब अपना पता पूछने से कतराता है, क्योंकि पता तो यही है जहां वो लोगों को अंग्रेजी बोलते देखता है और सुनता है और सोचता है और सोचता रह जाता। अब एक आखिरी मैं एक गजल की खिदमत में अर्ज है। बारिश भी मेहरबान हुई आसमान पर, मौसम तुम्हारी दीद का आया नहीं, मगर मुझको तो खैर हार की आदत सदा से थी। तू भी बिखर गया है जिगर को सुधार कर, शानों पे तेरी जुल्फ तो पिघला गई थकन, पैरों में कांपती है मगर हालत सफर, फिर रूह अपने जख्म की तामीर कर रही, धुंधला गया है मुझ पे मेरी नींद का असर। और आखिरी शेर है, कल रात मेरे शहर का एक बेवकूफ चोर हल्का सा रो दिया था मेरी जेब मार कर। So, thank you so much. There's so much humanity in your poems, really. Adil, I've never heard your poems before. Really beautiful. Thank you for sharing them. Thank you. So we also do have Ispa who has joined. I just wanted to say a quick hello. And Mahanur, of course, who is... Hi. Hi. Can we see you, Ispa? There you are. Hi. Hello, Isba. Yes. So lovely to see you. Hello, guys. How are you all? Very, very well, and very, very happy that you have joined us.
Yeah, glad I could. If my voice breaks or my picture breaks, my video breaks, please let me know because we are having some trouble, internet problems at my end. So You are now. Now that you seem quite stable with the internet, yeah. you go now? Why don't you go now? Yes. Yeah. Lovely. Yeah. Okay. So, hello everyone. Thank you so much for having me. I absolutely love you guys. You already know that, especially Nandini ji. My my relationship with all of you has always been virtual. I have never met any of you in person. Um, my understanding of history, my understanding of partition was all that I learned through my course books, not through these books that I have here. So all the experiences that I have, the perceptions that I have, the love that I have for people across the border, they actually came through all of you. So thank you for enlightening me and welcoming me and not making me feel like I was an oddball. Today, I'm going to read a passage from one of my favorite writers and a book. It's not something I have written because whatever I have written, it did not seem like it was at par. So I just chose Backman because of her history, दोनों countries की, और खास तौर पे the sports rivalry that we have, वो बहुत अच्छी reflect हुई है इस बुक में और बिल्कुल शुरू के ही पेजेस पे 5 से 6 पेज पे बहुत खूबसूरती से इस राइटर ने एक्सप्लेन किया है कि what does this sport rivalry actually does to us. It brings us home as well. It teaches us a lot of important lessons. लेकिन ultimately वो जो एक छुपी हुई जिसको कहते हैं ना इंसान की hatred होती है उसको वो फ्रंट पे ले आता है. So we all get very defensive when we start putting up boundaries right there and then. फिर एक कोई बड़ी चीज होती है, कोई disaster होता है, like जिस तरह एक power थी was ruling over all of us, and then we all came together to get rid of them. So this is something that is depicted in this book very, very effectively. So with your permission, I'll start. That's okay. Do you want to understand? Then you need to understand that this is about more than maps. From above, we probably look like just two ordinary forest towns, hardly more than villages in some people's eyes. The only thing that actually separates Beartown and Head is a winding road through the trees. It doesn't even look that long, but you will soon learn that it's a serious walk if you turn up and try it with the temperatures below freezing and there's a headwind, and there aren't any other sorts of temperatures and winds here. We hate Head, and Head hates us. If we win every other hockey game throughout the entire season, but lose just one game against them, it feels like a failed season. It isn't enough for things to go well for us. Things also need to go to hell for them. Only then can we be properly happy. I think this is very relatable. Beartown plays in green jerseys with a bear on them, and Head plays in red with a bull. Which sounds simple, but the colors make it impossible to say where hockey problems end and all the other problems start. There isn't a single fence in Beartown that isn't painted red, and not one in Head that's painted green. Regardless of whether the homeowner is interested in hockey or not, so no one knows if the hockey clubs took their colors from the fences or vice versa. If the hate gave rise to the clubs or if the clubs gave rise to the hate. You want to understand hockey towns? Then you need to understand that here, sport is about much more than just sport. But do you want to understand the people? Really understand them? Then you also need to understand that very soon, a terrible natural disaster is going to destroy things we love. Because while we may live in a hockey town, first and foremost, we are forest folk. We are surrounded by trees and rocks and land that has seen species rise and be wiped out over thousands of years. We may pretend that we are big and strong, but we can't fight the environment. One day the wind starts blowing here, and during the night that follows, it feels like it's never going to stop.
Soon Maya will sing songs about us, we who are close to wilderness, inside and out. She will sing that the place where she grew up is defined by tragedies, the ones that hit us and the ones we were guilty of instigating. She will sing about this autumn when the forest turns against us with full force. She will sing that all communities are the sum of their choices and that all that holds us together in the end are our stories. She will sing, it started with a storm. So yeah. So I think all of you were able to identify the sarcastic, things that I was trying to say, and how we have let just one sport divide us so much that when it's sports season, even a very, should I say, educated person like me gets, behind the flag and tries to. So it's not the thing that I really loved in this passage was that it's not enough for us to win. We have to see you miserably lose as well. Yes. I think somewhere, when we are talking about building bridges and dissolving borders, then even this is the reality of it, that we are united in that feeling as well. But we were together when we tried to beat the one force. So I think this was also reflected in the passage. Okay, if push comes to shove, I'm going to stand with you. That's it. We are one people. Absolutely. And I have to say that two javelin throwers have done more to bring two countries together than two big cricketing teams. Two javelin throwers and their mothers. And their mothers. Such adorable comments from both of them. I was in tears. I was like, okay, yeah, they truly are mothers. They have the mother's heart. Yes. And Isma, I think this might be true for many of us. I think everybody is in such a heightened emotional state right now, just at the state of the world, that the small bit of kindness and softness and humanity is actually enough to make you start weeping or crying. Exactly. I don't know if we are weak or the times are hard, but the tears do flow. We are not weak. We are not taking that, okay? We are not weak. स्पोर्ट्स और क्रिकेट से एक बड़े मजे की बात याद आई कि यहाँ पे वर्ल्ड कप जब ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था, तो जब मैं पर्थ में रहती हूँ तो यहाँ पे डबल हेडर था। तो सुबह पाकिस्तान का मैच था और शाम को इंडिया का मैच था। एक दूसरे के साथ नहीं था, दोनों का डिफरेंट टीम्स के साथ था। तो हमारे सिंगापुर से फ्रेंड्स आए हुए थे इंडिया के और देखने के लिए, तो हमने डबल हेडर की टिकट्स ली। हमने कहा हम दोनों मैचेस देखेंगे, तो फॉर वंस मतलब एक दूसरे के साथ नहीं हम खेल रहे थे। सो आई रिमेम्बर के एज यूजुअल पूरे स्टेडियम में इंडिया का जर्सीज नजर आ रही थी। पाकिस्तानी तो हर जगह इतने कम होते हैं, तो बहुत छोटा सा ग्रीन था और बहुत ज्यादा ब्लू था। और इंडियंस भी पाकिस्तानीज का मैच देख रहे थे और पाकिस्तानीज भी इंडिया का मैच देख रहे थे। तो मुझे याद है हमारे पीछे भर के पूरे इंडियंस बैठे हुए थे और हमारे साथ भी हमारे फ्रेंड्स इंडिया के थे। अच्छा, अब जब भी पाकिस्तान का कोई आउट होता था, पहले पाकिस्तान का मैच था, अब जब भी कोई पाकिस्तान का आउट होता था, ये लोग पीछे से खूब चेयर करते थे। सो ऑल इट टुक वाज आई जस्ट टर्न्ड अराउंड, बहुत सारा क्राउड था और मैंने ना थोड़ा सा अपनी आवाज ऊंची करके कहा, मैंने कहा यार हम लोग इतने थोड़े से हैं, आपके साथ हमारा मैच भी नहीं हो रहा, आप लोग तो जीत ही जाते हो, अभी थोड़ा हमारा सपोर्ट कर लो यार, कुछ नहीं होगा। All it took was that, and oh my God, like they all turned and they were like cheering and they also took a flag from us. And I was just thinking to myself, maybe it's bigger in our heads than in reality. All it took was for me to turn. I was like, yeah, bas kar do, dil tode ho tum log, itna cheer kar rahe ho, hum log वैसे ही इतने कम हैं. And then they're like, yeah, bang on, like give me our flag, or full. So it was so nice to see that sometimes this all nonsense is just like, it's so much bigger on like TV and social media, and जहर है सोशल मीडिया। तो मतलब जब क्रिकेट होती है तो सोशल मीडिया तो देखना ही नहीं चाहिए। बट या, इट वाज रियली रियली फन। एंड आई रिमेम्बर जब हम लोग का दिल दिल पाकिस्तान बजा, बिकॉज हम लोग जीत गए थे, तो सारे दिल दिल पाकिस्तान गा रहे थे। और उसके बाद जब फॉरेन इंडिया का मैच शुरू हुआ, तो हम सबको तो इंडिया का नेशनल एंथम याद है ना, तो हम लोग सब वो भी गा रहे थे। तो सम मोमेंट्स लाइक दिस, like you just realize how similar we are. We're more similar than we think. And as Nandini said, differences this is something so interesting that you mentioned right now. We actually know the national anthem. Yeah. We know it by heart, and I think even they don't know about it. I don't know if you guys know this.
We actually know we How actually do know you, that. how Can do I you, refresh your Your memory media, to the your event media, that we because did? we were, yes, Aseem would growing remember. up, we were exposed to your media. We used to watch every show there was, and my mothers were like fans of your soaps and all that. So we used to really? sit and yeah, it was like a whole family thing. We used to have dinner together, and there was a 9 o'clock show on Star Plus or something, and my mother used to follow that. And this is like, I never watched any Indian movie until I was like well in university, because I wasn't allowed. But television, like your shows, your TV shows, this was something that we used to sit and watch together as a family. And I still have a couple of them as my guilty pleasures. I go back to them and I still watch them, and I am thoroughly judged for it. I don't care. I love them, so I watch them. So that's actually something that's very true. Two things I want to mention. Just Fizza just said about Pakistan-India ka match. Some years back, I remember there was this concert of Ayushmann Khurrana, the Indian actor slash singer, and it was. मैं तो उधर नहीं था, but social media पे देखा था कि he started singing Dil Dil Pakistan, and even the Indian crowd was saying Dil Dil Pakistan. इसके बाद he sang Chak De India, and then Pakistani crowd sang Chak De India. एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा था. एंड सम इयर्स बैक, आई थिंक 4-5 years बैक, शारजा में मैच हो रहा था, एंड दिस पाकिस्तानी बॉय फर्स्ट sang द नेशनल एंथम पाकिस्तान का, एंड देन ही न्यू इंडिया का नेशनल एंथम. तो दीज थिंग्स जो होते हैं बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की कोई चीज होती है. No, but lovely to hear these anecdotes. And yes, when we were little, I know that we used to watch, and our mums and other people used to watch this thing called Dhoop Kinare, and they loved it and they were obsessed with it. And I think they all had a crush on whoever the main characters were. And I'm Dr. sure, Emmer. Dr. Emmer. right? I don't know how many people got into medicine because of watching Dhoop Kinare. नहीं, जिस तरह आई ऑलवेज से कि आई claim to be the biggest Amitabh Bachchan fan on the planet. So Lots Yeah, of it love. is. Because my mother used to like, she put this ban on us that we couldn't watch the movies or anything, and now she's the one who keeps reminding all of us continuously that Shah Rukh Khan is of my age. And yeah, so I'm like, okay, mom. She reminds me that every year on a birthday, the Shah Rukh Khan is of my age, and we share the star sign and everything. And I'm like, okay, mom, thanks for the information. Also, something that I just remembered, because this very close to my heart. My son, most of you know, he's autistic, so he's very sensitive to the sounds or the kind of music that he listens to. He's very particular about it, and once he picks a song or he likes a song, he listens to it obsessively on repeat. So one day, Pakistan finally got its Spotify app, and I got him the app, and I made his let him make his own list, and he did that. And the first song that he put there was Gully Boy. And I was yeah, he used to, dance on it and bounce on the sofa while it was being played. And it was on continuously in my car throughout the 2 hours commute that I do to my work. And one day, he opened Spotify, and the entire Gully Boy list has been deleted. And I was absolutely shocked, and I was like, what just happened? And I tried to Google it, and apparently they put a regional restriction on it. So listeners from Pakistan could not access that content. And my child was heartbroken, and I was like, this is not fair. So, it's just little things that, they वो एक छोटा सा ना बीज डाल देती है आपके दिल में, and you're like so sad about it. Like, what is happening? It's just music. It's art. People should have access to it. One of the reasons that I joined today was exactly, I made time. The internet was not okay. Ateeb has injured his toe and everything. But I was like, I need to make this happen because this is art, and this needs to be beyond borders, like you said. This feels like this could literally be in one of our homes, and everybody's just sitting around and having, like in Kolkata, we call it like adda, which is just people sitting around and having a chat and sharing poems and talking over each other, which we do, which we enjoy. And I love it. And it just feels really beautiful, this moment. So thank you. I wanted to read one poem maybe of mine, and another one that I had set aside, which I quite enjoyed. This one is called Hope. It's from my book Worlds Within. Many of you have supported it, and many of you have copies of it, and it feels really good that my book lives in many homes and hearts.
So this is one poem from that. It's called Hope. The next time we speak of them and of us, of their lands and our lands, their gods and our gods, remember the blood of these dead children that's on their hands and our hands. For the hate that we spew and the battles we wage, the anger, the fear, the uncontrolled rage, we think we are right and the other so wrong. If we make them submit, it'll prove we are strong. But the tears of a mother over her lifeless child, a father's grief, a stricken mind, makes no one a hero, a savior, a saint. It's a blot on us all, an equal disgrace, just a wasted chance for the human race. But all is not lost. We fight with just love. We conquer ourselves. We rise above. Our time is now. It's for you and for me to say enough. This isn't how I'll be. And we'll open our minds, our thoughts, and our hearts and believe we can make a brand new start of a simple life with love and laughter, peaceful earth for the world ever after. Isba. Isba's got the copy. Okay, this is a very beautiful and very special moment for me. Thank you for showing me the book that is yours. And since we're talking about poetry, actually, I wasn't planning to read this, but I think I should, which is Poetry is a Snitch. Poetry is a snitch. It tells on oppressors who would rather we read the newspapers they print. It reveals intent that words conceal. It is a busybody. The woman knitting at the window behind the lace curtain, she saw where you dropped the knife, she knows. It is a child who wants to know about the mole on your nose or how you lost an eye. Not impolite, just curious. It is the quiet guest who registers your big laugh, your extravagant hosting, your extra wide smile, but notices it didn't reach your eyes. You look into his eyes and know he knows. And sometimes when times are dark, it is the traveling mendicant who grabs you by the throat and makes you swallow bitter pills in jagged earth. For you may not know your sickness yet, and you may not have seen the darkness. I'm going to let someone in. You may not have seen the darkness, but the winds have picked up an unfamiliar scent, and the songbirds no longer come. And those who have turned to look up at the sky, they have seen the clouds gather and heard the distant rumblings from across the hills. So with a tender kiss on love's sleeping eyes, poetry must quietly leave and find its way through narrow streets and snaking alleyways, to darkened porches and shadowed nooks under bridges, to gather where the others are, for there the words will come that speak of truth, and the words will be written and shared and spread, traveling to those who are asleep, so they may too awaken, for they may too know. And those who do not understand it, who seek to imprison it, to stifle it, to silence it with their might, they will now learn to fear it. Thank you. So these were the two poems of mine, but if I may, I'm going to read one more quick poem, which is by Rohan Chetri, who is an Indo-Nepali poet. And there's something very visceral about his poetry that I enjoy. This one is called Violence Enters a Poem Like a Restless Wind Inside a Burning House. Somewhere near the borders to a wall-less country stands the house my grandfather built. Tired by the day's work, my mother has already fallen asleep in front of the television. My father is noiselessly setting up the mosquito net above the bed. During the day, the town rife with revolution dreams of a new state. They have licked the salt of freedom and cannot unlearn the taste. Someone I used to know gets shot an inch above the ear in a crossfire. My mother imitates that foreign tenor people acquire while breaking news of unfortunate deaths.
His blood is washed off the streets in the winter rain and drained in the sewage that shares the common filth of the two nations. Tomorrow my father will cross the border again to go work for a bad-tempered man. He's had it, mother tells me over the phone. They need to get out of there, I think, but I never say it. The paranoia changes hands as spring comes on early and I read in the papers a nation is sending the refugees back to the country they fled from. On their way, they stop on the trails to look for the frost-bitten fingers they lost in the difficult winter of their lives. Just think it's such a beautiful poem by a very, very talented poet. And with that, I think we have come to the end of everybody who's live here to read. But I think we have a very, very special video from our beloved Mahnur. He's our lucky star, and I'm so glad that he came and showed us his beautiful face. Blessed all of you. Congratulations. Thank you very much. And Abhijit, if you may please play Mahnur's video, and I'm so glad Mahnur is here now. She can't be on live, but she's around. Yeah, I'm just playing the video now. Hi everyone, my name is Mahnur and I am here for Beyond Borders. I would like to thank Nandini for giving me this opportunity and including me in this very beautiful sitting. I wish I could come live with you all, but I'm currently just occupied somewhere else, and this has been a real honor for me. Happy Independence Day to India and Pakistan. काश के हम सब जो हैं इस बात को बार बार रिकॉल करते रहें कि हमने आज़ादी एक दूसरे से हासिल नहीं की, हमने आज़ादी ग़ुलामी से हासिल की थी. और I know when push comes to the shove, everyone is like really disappointed nowadays. We are just not ready to talk about what has been bothering us. I mean, there are people who are ready to leave the countries, both of them, I think. मैं खुद जब एक माँ बन के सोचती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि I think I should go somewhere where my children are safe, where they're happy, where I don't have to worry about them getting politically suffocated. इसका सही वर्ड तो मैं यही इस्तेमाल करूँगी. सफोकेशन है एक किस्म की पूरी फ़िज़ा में, और पंजाबी में कहते हैं ना नवा कट्टा खुल गया. Like every time you switch on your television for your national news, there is a nava katta waiting for us. And for this sitting, I chose Toba Tek Singh by Hazrat Manto. उनको इस ज़माने में होना चाहिए था. बहुत अच्छा सबको दुरुस्त करते तबीयतें, लेकिन he is not here with us, but his writings are. So टोबा टेक सिंह में नकल मकानी के कर्ब को महसूस किया गया है, यानी कि वही जगहें, वही इलाके जो कि पहले एक थे, जब अलग हो गए तो उसका वहाँ के रहते हुए जो मेंटल असाइलम के पेशेंट्स थे उनके ऊपर क्या गुजरी, बिकॉज़ वो ऑलरेडी एक कर्ब से गुजर रहे थे, अपनों से दूर भी थे, कुछ उनके जहनी मामलात भी ऐसे थे, लेकिन उनकी समझ में ही नहीं लगता था कि वही जगहें जो एक थीं वो अलग कैसे हो गईं. बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का भी तबादला होना चाहिए. अखलाकी कैदी यानी कि मंटो यहाँ पे एक बहुत कॉमन जो आजकल की भी प्रॉब्लम है, हम सब जो हैं एक किस्म के कैदी और ग़ुलाम बन चुके हैं. यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए. मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल
दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक इधर उधर ऊंची सतहों की कॉन्फ्रेंसें हुईं और बिल आखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान में ही थे वहीं रहने दिए गए। जो बाकी थे उनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। Everybody in this place was showing their emotions one way or the other. हम लोग, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो सिखाया था या हमें फीड किया था वो यही था कि हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है। हम सब हिंदुस्तान पाकिस्तान, हम जितना शायद मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं शायद ही कोई और होता होगा जो रह सकता होगा। बिकॉज हम लोगों के इमोशंस एक हैं, हमारे दुख एक हैं, हमारी खुशियाँ भी एक हैं। रिसेंटली when in Olympics we saw what the one mother was saying वो मेरा बेटा है, दूसरी अम्मा कह रही थी वो मेरा बेटा है। मतलब it's so nice मेरे ख्याल में दुख में ना सब साथ होते हैं। लाइक आपका जो दुख होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे फील हो जाता है, पर जो लोग खुशियों में साथ होते हैं ना, जिनको खुशी मनानी भी आती है और सेलिब्रेट भी करनी आती है, वो एक अलग लेवल होता है। और हम सब देखते हैं कि हम सब हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग एक दूसरे की खुशी में शायद दूसरे से ज़्यादा खुश होते हैं जिसकी खुशी होती है। यहाँ हम वापस तोबा टेक सिंह पे आते हैं। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायदे आज़म कहते हैं। उसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वक़ू क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इस मकसमे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में है तो पाकिस्तान कहाँ है? अगर वो पाकिस्तान में है तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसे पहले यहीं रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे? एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज़्यादा पागल हो गया। झाड़ू देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने उसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो उसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूँ न पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त पर ही रहूँगा। आई थिंक ये अब हम सब हैं, बिकॉज हम सब अब दरख्त पे रहना चाहते हैं। अच्छा, आगे कुछ जाके जब हम जाएंगे तो हम देखते हैं कि बिशन सिंह एक इंसान है जिसने कहा कि मैं तोबा टेक सिंह में रहना चाहता हूँ। अब वहाँ से वो बिलोंग भी करता था। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि he'll be stuck in पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बिशन सिंह के एक दोस्त हैं फजलदीन जो उनसे मिलने आते हैं और वो उनसे सवाल करते हैं, तोबा टेक सिंह कहाँ है? फजलदीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वहीं है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में। नहीं, पाकिस्तान में। फजलदीन भुखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया, ऊपर दी गुड़ दी एनेक्स दी बेदिहाना दी मूंग दी दाल ऑफ पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुर फटे मुंह। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाहगा के उस पार मुतलका अफसर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा तो उसने पूछा, तोबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतलका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। ये सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी मांदा साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। तोबा टेक सिंह यहाँ है और जोर जोर से चिल्लाने लगा,
ओ पड़दी गुड़ गुड़ दी एनेक्स दी बेदिहाना दी मूंग दी दाल ऑफ टोबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। उसे बहुत समझाया गया कि देखो अब टोबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वापस भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब उसको ज़बरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक और जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया, जैसे अब उसे कोई ताकत वहाँ से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेज़र था, इसलिए उससे मज़ीद ज़बरदस्ती ना की गई। उसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकत और सामत बिशन सिंह के हलक से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था, ऊंधे मुंह लेटा है। इधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। हम बहुत सी स्टोरीज को रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन आई थिंक कि इस टाइम पे ख़ास तौर पे मैंने टोबा टेक सिंह का इंतखाब इसलिए किया कि बियॉन्ड बॉर्डर्स we just have a place that we can call home. Border is a mindset. हो सकता है आप दो लोग साथ रह रहे हैं, आप अपने कॉलीग्स के साथ हैं, आपके दरमियान एक मेंटल बॉर्डर है, there is an abstract border, you cannot cross that. हम सब चाहते हैं कि हमारी बाउंड्रीज हों, हम सब चाहते हैं कि हमारे हेल्दी बाउंड्रीज हों, बट यू नो देयर आर सम टाइम्स व्हेन वी जस्ट कैन नॉट लिव विद ईच अदर, वी आर जस्ट टू डिसअपॉइंटेड इन ईच अदर। हम लोग, इट्स जस्ट दैट वी आर समहाउ स्टिल स्टक लाइक टोबा टेक सिंह। आखिरी लाइन मैं इसको दोबारा भी कहीं से चेक करूंगी कि 15 बरस 15 years ही kept standing there। बहुत से लोग होते हैं जो इसी कश्मकश में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, इसी नफ़रत का बोझ लेके खड़े रहते हैं, एंड देन इट्स ओवर। तो हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि जितनी भी सरहदें हैं उनको ख़त्म किया जाए, टेंजिबली नहीं तो इनटेंजिबली एटलीस्ट। और इट वाज वेरी हैवी फॉर मी टू रीड दिस अगेन, एंड इसी बात पे मैं एक ट्रक पोइट्री जो है विकी कौशल के नाम करती हूँ। वो मिले भी तो सरहद के बॉर्डर पर, अब तुम ही बताओ हम फायरिंग करते या मोहब्बत। तो हम तो मोहब्बत करेंगे इंशाल्लाह। और I wish you all the best. Happy Independence Day to both of the countries that I love with all my heart. Okay. Oh, also I would add a little bit on what the conversation was going on about the national anthems. So we actually witnessed this live. Maybe some people remember it. Aseem guy. When we did that event, Sarhade, so impromptu, the group we did an event where we had, live video streaming from both sides, like how we're doing it right now. It just the difference was it was a bigger screen and it was in a bigger space and we had a lot of people on both sides. So impromptu, beech mein se hi, people in the Karachi started singing Sare Jahan Se Acha Hindustan, like out of nowhere. And it was like everyone in Delhi, I like remember that. I still have the video. Isba knows. Yes, Yeah. Isba was there. She knows. Well, at And it least was such a goosebumps moment, Yeah. and then or Delhi mein fir baad mein Connaught Place mein, the people who were there, I think there were at least 100 people there in that room. 100 people who had come. They all started singing Dil Dil Pakistan. And it was such, I mean, Yeah. You know, it's actually amazing that people actually know Dil Dil Pakistan better than the national anthem. So it's like it's come to be known as the national anthem now. The song is so famous, and I'm not complaining. But If you it's ask a lovely. pedestrian like walking anywhere in India, what's the Pakistan national anthem? That's what they're gonna sing. Yeah, exactly. That's what your pop culture does to you. But anyway, it was such a
such a goosebumps wala moment that it's one of the best moments that we witnessed in whatever events we did later on also. And then after the event, there was like this one very old lady, I think Aseem must be remembering. She was the wife of a war veteran who was killed, maybe martyred in one of the wars. And she came to us and she was speaking about how she loved the whole concept and the event and everything. It was really something. It was very, very, we still cherish that evening so much. I just wonder now, agar aaj ke zamane mein, like in today's date, if someone goes in Delhi and sings Dil Dil Pakistan, तो पता नहीं उसको उसी रात कहाँ गायब किया जाएगा. You don't know what would happen to him. But we have hope. He'll be checking out the acoustics of Tihar jail. Yeah. No, we have hope, and hopefully, like this is a start. I think उसे पाकिस्तान भेज देंगे. अच्छा, हो सकता है. पता नहीं क्या. But it was very nice, and really glad that happened. I have a poem. Actually, I have two poems. I'm confused. I want to read just one of them. I think I'll read this poem, which is on Radcliffe by W.H. Auden, than a poem of mine, because this is a very bittersweet, funny poem, and I think it would be a very befitting poem for today's occasion. So, But Abhijit, we would love to hear yours, actually. If you're just picking one, then it should be yours. If you read... I agree. मेरी जो poem है वो काफी संजीदा है. It's a bit, this is a... काफी संजीदा लोग हैं, समझ जाएंगे. नहीं भी हम समझ जाएंगे, आप कोशिश करें. Okay, fine. ठीक है. So this, I'll read my poem. It's in Hindustani. I don't write much in Hindustani these days. I don't know why, but ये लिखी थी. मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ बहुत आजकल मुंबई में. So the only time that I get to write poetry is when I'm traveling in the local and if I get a seat there in the train. तो फिर मेरी 1 घंटे की जर्नी, I write a poem. So I wrote this. आजकल बस इतना ही कर पाता हूँ. That's the title of the poem. आजकल बस इतना ही कर पाता हूँ. गाजा में मरते हुए बच्चों को नहीं बचा पाता. गाजा में मरते हुए बच्चों को नहीं बचा पाता, ना ही आतंकवादियों को शांति का मार्ग दिखा पाता. नफरत की राजनीति करने वालों को और नफरत फैलाते हुए बस देखता हूं प्राइम टाइम पर. पूंजीपति, कैपिटलिस्ट्स, पूंजीपति जब प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी, पूंजीपति जब प्रजातंत्र की नीलामी कर रहे होते हैं, तब मेरा योगदान, कंट्रीब्यूशन, तब मेरा योगदान सिर्फ एक दबी हुई गाली होता है. पूंजीपति जब प्रजातंत्र की नीलामी कर रहे होते हैं, तब मेरा योगदान सिर्फ एक दबी हुई गाली होता है. ना मैं अपने गांव की जमीन साहूकार से छुड़वा पाता हूं, ना वहां अपना पुश्तैनी मकान बनवा पाता हूं, ना ही अपने बाप को यूरोप घुमा पाता हूं. अपने इश्क को भी दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ा बस देखता रहता हूं. पटरी पर उतरने की जब सोचता हूं, तभी एक लंबी मालगाड़ी कहीं से आ जाती है, जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती. बहती हुई नाक वाले उस भिखारी बच्चे से नजर फेर लेता हूं. अपने मोबाइल में कुछ करने लगता हूं. रात को थका हारा कविता लिखते लिखते सो जाता हूं, और वो आधी अधूरी कविताएं मेरे सीने पर मुंह खोले जमाइयां लेती रहती है. रात को थका हारा कविता लिखते लिखते सो जाता हूं, और वो आधी अधूरी कविताएं मेरे सीने पर मुंह खोले जमाइयां लेती रहती है. आजकल बस इतना ही कर पाता हूं. गली के कुत्तों को रोज बिस्किट खिला देता हूं, तब शाम दुम हिलाने लगती है, मेरी नकारी सहलाने लगती है. आखिर में एक अंधे को ट्रेन के प्लेटफॉर्म पार करा देता हूं. आखिर में एक अंधे को ट्रेन का प्लेटफॉर्म पार करा देता हूं, फिर भीड़ में कहीं चुपचाप खो जाता हूं. अगर मैं कहीं वक्त पर पहुंच गया
अगर मैं कहीं वक्त पर पहुंच गया तो कहीं और पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी. I'm so glad you read your own poem. Thank you. This was a good call by us. It was absolutely beautiful. Yes, that was Did beautiful. you do it? I absolutely loved it. Thank you. Thank you so much, Abhijit. That's lovely. Thank you. Thank you. Anyone? Any last calls like they do at a event with drinks? Any last calls? Any last poems? Who has a burning poem inside them that they must recite? Aseem, you've got that look. I've always got that look. One more. Let's hear. It's why I don't go to parties anymore. One more. All right. I had that look, but I didn't have a poem ready with me, so allow me a moment. Absolutely. And I know Deepak is here. Deepak, if you feel like it's quite late for us here now, but if you feel up to it. Yeah, sure. Sorry, I'm lying in bed. It's about midnight here, so I won't show my face. लेकिन जब तक अभी शुरू करूं क्या? मैं खुद नहीं लिखता हूं, तो हाल ही में मैंने एक पोएम पढ़ी और जो मैंने कहीं पर रिसाइट भी की, तो which is very timely. It was written in 2015 by a poet called Katyayani who lives in Lucknow. और इस कविता का हिंदी में है और इसमें हिंदी के कुछ शब्द हैं, शायद सबको समझ ना आए, और कुछ अल्फाज कोशिश करूंगा अगर उनको मैं ट्रांसलेट करूं, लेकिन ज्यादातर समझ आ जाएंगे आपको. तो इसका नाम है फिलिस्तीन 2015. तो 2015 में लिखी गई, लेकिन आज भी बहुत टाइमली है. तो फिलिस्तीन 2015 बाय कात्यायनी. वहां चलते हुए धीरज के ताप से गर्म पत्थर हवा में उड़ते हैं. पतंगे थकी हुई गौरैयों की तरह टूटे घरों के मलबों पर इंतजार करती हैं. वीरान खेतों में नए कब्रिस्तान आबाद होते हैं और समंदर अपने किनारों पर बच्चों को फुटबॉल खेलने आने से रोकता है. वहां हर सपने में खून का एक सैलाब आता है. झुलसे और टूटे पंखों, रक्त सनी लावारिस जूतियों, धरती पर कटे पड़े जैतून के नौजवान पेड़ों के बीच अमन के सारे गीत एक वजनी पत्थर के नीचे दबे सो रहे होते हैं. फिलिस्तीन की धरती जितनी सिकुड़ती जाती है, प्रतिरोध उतना ही सघन होता जाता है. प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस. जब संगीनों के साए और बारूदी धुएं के बीच अरब बसंत की दिशाहीन उम्मीदें बिखर चुकी होती हैं, तब चंद दिनों के भीतर 500 छोटे छोटे ताबूत गजा की धरती पर बो दिए जाते हैं और माएं दुआ करती हैं कि पुरहौल दिनों से दूर अमन चैन की थोड़ी सी नींद मैसर हो बच्चों को, और ताज़ा दम होकर फिर से शोर मचाते वे उमड़ आए गलियों में, सड़कों पर जत्थे बनाकर. It's a very long poem, so I'm going to just cut out some parts and read the rest of it. जिस समय विचारक यानी थिंकर्स गण भाषा के पर्दे के पीछे सच्चाइयों का अस्थि विसर्जन कर रहे होते हैं, इतिहास के काले जल में और सड़कों पर शोर मचाता, शंख बजाता एक जुलूस गुजरता होता है. कहीं सोमनाथ से अयोध्या तक, तो कहीं बगदाद से त्रिपोली होते हुए दमिश्क और बेरूत तक. ठीक उसी समय गजा के घायल घंटाघर का गजर बजता है. गुजरे दिनों की स्मृतियां अपनी मातमी पोशाकें उतारने लगती हैं. माएं छोटे छोटे ताबूतों के सामने बैठ लोरी गाने लगती हैं और फिलिस्तीन धरती पर आज़ादी की रोशनी फैलाने में साझीदार बनने के लिए पूरी दुनिया को संदेश भेजने में नए सिरे से जुट जाता है. थैंक यू. Thank you, Deepak. This was very beautiful. Thank you. Very nice. And now we'll have Aseem as our finale. I'm just gonna recite a couple of couplets. एक आध शेर थोड़े एक खुशनुमा या मतलब एक होप की तरफ जाने के लिए.
तो चंद शेर हैं, सब अनम्यूट करके वाह वाह भी कर सकते हैं आप, क्योंकि दिस इज लाइक we're almost getting to the end of it, and I would like to hear your voices. And Uh, also, I would it's like it's also always absolutely weird to recite ghazals in an online event, because at the end of every couplet you just keep looking in the oblivion, like it gets existential to after a point. तो असीम, हम Right. आपको अभी से ही वाह वाह कह देते हैं. ठीक है. I would love to see some faces as well. We'll take a quick picture if whoever feels up to it to show us their lovely faces. But after Aseem is done. All right. So, इरशाद, ध्यान दीजिएगा कि जो है तारे कहकशां में जगह हम भी बना लेंगे. जो है तारे कहकशां में जगह हम भी बसा लेंगे, नहीं तो रात से कालिक चुरा कर दिन बना लेंगे. वाह वाह वाह, बहुत खूब. जो है तारे कहकशां में जगह हम भी बसा लेंगे, नहीं तो रात से कालिक चुरा कर दिन बना लेंगे. जहां 2 गज जमी खातिर है मरते लोग आए दिन. जहां 2 गज जमी खातिर है मरते लोग आए दिन. वहां पानी सुखा देंगे, जमी बंजर बना देंगे. वाह वाह. वाह. हाँ. और शेर देखिएगा कि शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हम, अब बसर ना जिंदगी होगी. शिकायत कर रहे हम, अब बसर ना जिंदगी होगी. मगर दम आखिरी लेते हुए छाती तना लेंगे. क्या बात है. बहुत आला, बहुत आला. और आखिरी शेर है कि धनक के 7 रंगों में जमी बेरंग रह जाए. धनक के 7 रंगों में जमी बेरंग रह जाए. महज एक सुर्ख रंग लेकर जमी पर दिल सजा लेंगे. क्या महज बात एक सुर्ख रंग क्या लेकर जमी बात पर है, दिल क्या सजा. बहुत खूब, बहुत खूब. क्या बात है, क्या बात है. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. How wonderful. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अब लगा मेरे को कि मैंने सुनाई है कोई गजल. I think this was really, really special and precious. If we could see some faces, we'll take a quick picture. Who's going to take it? Maybe Aseem, you can take a... I can do it. How lovely. All right. Thank you, everybody. It's been a long session, longer than I expected, and I'm so grateful for everyone's time. We will post it, and thank you for everybody who performed and read. And Fizza, thank you. Ispa, thank you so much. Who else is here? Aseem, Abhijit, Deepak, thank you for coming in. And of course, you know, we have Mahanur, but we don't have Mahanur. So that's an existential moment as well. But we will post her her video, and I would love everybody to watch it. But she's given us instructions on what to do. Just a request, all those poets and poetesses who have read their own work, can we have like a file of it, and they can share their stuff, written stuff with it? You can make one file, maybe a Word document, and if you can kindly share that, whatever was read today specifically, their own writings, just their own writings. So I would love to have that. We'll do that. Yeah, yes, for sure, for sure. Oh, We'll do great. that, and we can share that with the group as well. Thank you. Good night. Have a wonderful evening.